Hello everyone and welcome to this video series on investment banking interview tips and strategies. This is the second video in this series, and in this video we want to discuss how do you handle some of the challenging questions. Questions like you are just a commerce graduate, how you are suitable for this investment banking role. A very relevant question. You have 3 years of gap after your highest qualification. How do you justify that? Very relevant question. You have 2 years of irrelevant experience. Now you want to make a career in investment banking. Can you justify that? Why should we select you? You are coming from a non-commerce background. How can you do the transition into a finance role? So these are some of the questions which are asked in the interview. And if you are not able to handle these questions, then you may not be able to make a positive impact in the interview, and you may not be able to bring the discussion on those topics which you have planned to discuss in the interview. If you are watching this video directly without watching my first video, then I'll suggest that you go back and check the first video, and the link of the video is given in the description also. What we have discussed in the first video, I'll just take 2 minutes and brief about that. When you go for the interview, you should plan the interview first. You should plan what are the topics that you definitely want to discuss with the recruiter. What are the topics that you would like to discuss for the investment banking role? You would like to discuss the strong and relevant points, strong and relevant topics like financial statement, you have done multiple finance projects, valuation projects, merger model projects, company profile and pitch book. You have done LBO, IPO, project finance. These are the topics which you have studied in our course, right? So in the interview, you should try to bring the discussion only on these topics. And how you will bring the discussion only on these topics? Through CV, through introduction, and through question and answers. And how you will actually do it? Through CV, introduction and question answers. Video is already available there, and this video is of 25 minutes. Please go back and check that. Now what is actually happening in the interview? Instead of coming on these topics, they started asking question on your weak areas. ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सबके लिए नहीं है, बट हर किसी का इनमें से कोई ना कोई वीक पॉइंट है. क्या हो सकता है कि आप तो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आप इस प्रोफाइल के लिए कैसे सुटेबल हो? You have irrelevant experience. How do you justify that? How can you become an investment banker when you have irrelevant experience? You have a gap of 2 years. What were you doing in that particular period? How do you justify that? Why should we select you? You are just an MBA fresher and we need an experienced candidate. Can you please elaborate and why should we hire you for that? You are coming from a non-commerce background, right? You have done BA, BTech, BCA or something else which is not from a finance background. So how do you justify that? Why should we hire you? You are already working in the similar profile. Why do you want to leave that company? So these are the questions which can be very challenging if you are not prepared for these questions. And what happens, जब मेरे स्टूडेंट मेरे पास मॉक इंटरव्यू के लिए आते हैं तो मैं इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ. अब क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए वो रेडी नहीं है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, दे आर नॉट एबल टू डू वेल इवन ऑन दिस क्वेश्चन इवन व्हेन दे हैव प्रिपेयर्ड वेल. क्योंकि सवाल उनसे वीक पॉइंट्स के लिए पूछ लिया गया और इनके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो वो ये क्वेश्चंस को भी हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि वो इंटरनली मेंटली उनको डिस्टर्ब कर रहे थे. तो आज हम इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है हम ये सीखने वाले हैं. हमारा कोर ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू में क्या होगा कि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हमें अपने इन पॉइंट्स पर लेके आना है. समझ में आ गई बात? तो पहला क्वेश्चन क्या है? यू आर बीकॉम ग्रेजुएट एंड हाउ यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रोफाइल. प्रिंसिपल समझिए, क्वेश्चन उसका कुछ भी हो, आंसर सबका सेम ही रखेंगे. हम अभी देखेंगे कैसे. तो हमें क्या करना है कि हमें अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के प्रोजेक्ट्स हैं. क्वेश्चन पूछा गया है रिलेवेंट एक्सपीरियंस का, गैप का, बट हम आंसर देंगे इस फॉर्मेट में. समझ के कैसे देंगे आइए देखने की कोशिश करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट, व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल.
Answer. Yes, sir. I am a commerce graduate and I have studied commerce in last 5 years. And I have learned a lot of things related to accounting, finance, capital market, and it was very theoretical, right? But to become actually employable for this particular profile of investment banking, I have developed the practical skills also. Sir, you require someone who can prepare the financial models, who can do the valuations. And I have done this job before the job. Because, sir, I have prepared six different financial models of different companies, absolutely from blank Excel file. My teacher taught me during the training only two models, but I prepared four other companies' financial model, and I am very confident of preparing the financial models from absolutely blank Excel file for almost any given industry. And sir, I did the valuation also for with the DCF valuation, with company comparable analysis, with company transaction analysis, and my faculty taught only one company's valuation, but I did the valuation for different companies myself. I also did merger acquisition model. I also prepared company profile and pitch book. I have also done project financing models. I also did one LBO model. The faculty taught only one model on LBO, but I have applied that LBO technique on different companies. So you require someone who has the skills of these topics like financial modeling and valuation. And I have illustrated those and I actually have applied those uh, skills onto different companies. And you can, I am applying here based on my skills which I have developed during the last 4.5 months of training. क्या समझे आप यहाँ पे? क्वेश्चन था कि बीकॉम ग्रेजुएट हो, हाउ यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रोफाइल. क्या किया आपने? पूरा डिस्कशन आपके आंसर में 90% क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही सब है. उसकी रिक्वायरमेंट ही यही है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक स्टूडेंट है, वहां पर 5 बच्चे और भी गए थे और ये स्टूडेंट जो बीकॉम ग्रेजुएट था ये भी गया था. ये एक कंपनी में डीलर की प्रोफाइल पर भी काम करता था, 6-8 महीने से काम कर रहा था. वो एमबीए के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, ये बीकॉम का बच्चा सेलेक्ट हुआ. क्यों? क्योंकि वो जो एमबीए के बच्चे थे उनकी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि इस बीकॉम ग्रेजुएट की थी. मैंने अपने कोर्स में कहा था कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से पढ़ते रहो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो. जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा. उस बच्चे ने जो बीकॉम ग्रेजुएट है उसने इस बात को समझ लिया और मान लिया. पूरे बैच में जो बीकॉम का बच्चा था उसकी सबसे पहले प्लेसमेंट हुई, बाद में एमबीए वालों का नंबर आया. तो ये बात आपको समझ में आ गई. पहले खुद को कन्विंस करो कि बीकॉम होना सफिशिएंट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल के लिए. कोई कमी नहीं है, आपको सिर्फ स्किल्स डेवलप करनी है फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन की, जो कि रेलेवेंट स्किल्स हैं. इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे. अगर आपने ये आंसर दिया जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसके बाद पूरा डिस्कशन, पूरे चांसेस हैं कि वो जो मॉडल्स आपने बनाए हैं नेटफ्लिक्स का, टाटा मोटर्स का, कैलोग्स का, एपीए कॉर्पोरेशन का, एप्पल का, मैकडोनाल्ड का, इन्हीं पर डिस्कशन कंटिन्यू हो जाएगा या वैल्यूएशन भी कंटिन्यू हो जाएगा, जो भी रिक्रूटर को चाहिए. ठीक है. तो आज के बाद अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि बीकॉम ग्रेजुएट फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोफाइल पे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा. आपको प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करनी है और उनको प्रैक्टिस करना है. ठीक है. यू आर अ फ्रेशर, ये सेकंड क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी हैंडल कर रहा हूं ये एक्चुअली उतने चैलेंजिंग नहीं है जितने चैलेंजिंग आपने इनको मेंटली बना लिया है. अब इनको मेंटली चैलेंजिंग क्वेश्चन बना लिया है तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन को भी ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, इसलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूं. ठीक है. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. You are a fresher. How can you be a suitable candidate for this profile without any work experience? अब इसका आंसर भी उसी लैंग्वेज में देना जो हमने बीकॉम वाले क्वेश्चन के लिए दिया था. क्या आंसर होगा? Keep a smile on your face. Sure, sir. Right, sir. I am a fresher. On paper, I definitely agree that I do not have any relevant experience. But, sir, in the last 5 and 6 months around, I have been practicing a lot of financial models and a lot of valuation techniques. Because, sir, I joined a practical training program where I have learned how to prepare the financial models and how to do the valuation of companies. Sir, I prepared not only
the financial models which have been taught by my faculty. I also prepared four other companies' financial model. Netflix and Apple models were taught by my faculty, but I also prepared the model of Kellogg's, McDonald, Seat Tire, Nestle myself, and I prepared these models absolutely from scratch. I understood how to read the company files, where do we download it from, how to understand the business model, how do we study management discussion analysis, how do we create schedules and forecast the financial statement. Lot of things I have understood, and I have gone through the job description, sir. In the job description you require someone who can prepare financial models, who can do the valuation. I also have done the valuations of companies using DCF valuation, company comparative analysis, company transaction analysis. Sir, I not only updated the data into the model, but I created those models from scratch. Sir, I think these skills are very much required for this profile, and I am confident enough that I can do justice with the profile. Leave the answer here. अब जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, बट लगभग ऐसी ही लैंग्वेज रखो, खुद को कॉन्फिडेंट रखो, सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। और मान लो कन्विंस नहीं होता है, कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, क्या प्रॉब्लम है? बहुत कंपनियां हैं, बहुत ओपनिंग्स हैं। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। एक बार आपकी ये स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, उनको खाली रिवाइज करते रहो एंड जस्ट वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ इंटरव्यू। राइट, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। योर बैकग्राउंड इज इन साइंस। एक बात और करते हैं, यू आर ए फ्रेशर, ये एक सवाल है, बट जो आज एक्सपीरियंस्ड है, कभी तो वो भी फ्रेशर था, तो उसकी भी तो कहीं जॉब लगी होगी, तभी तो जाकर के वो आज एक्सपीरियंस्ड हुआ है। तो आप आज फ्रेशर हो, आप भी एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस हो जाओगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कंपनी के ब्रांड पे नहीं जाना है, पैकेज पे नहीं जाना है, आपको प्रोफाइल को टारगेट करना है। एक बार प्रोफाइल हाथ में आ जाए फाइनेंस की, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करने को मिल जाए, एक्सेल पे काम करने को मिले, वैल्यूएशन करने को मिल जाए, मॉडल्स बनाने को मिल जाए, मॉडल्स ऑडिट करने को मिल जाए, फाइनेंशियल स्प्रेडिंग का काम मिल जाए, कोई भी ऐसा काम मिल जाए, एक साल तक आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है पैकेज से, जो कि जरूरी नहीं है। अच्छी कंपनियां, अच्छे ब्रांड, अच्छा पैकेज भी मिल सकता है, बट मैं क्या कह रहा हूं, आपका टारगेट प्रोफाइल होना चाहिए। एक साल रेलिवेंट प्रोफाइल पे आपने काम कर लिया, उसके बाद आपको जो पैकेज मांगोगे वो आपको पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। योर बैकग्राउंड इज इन साइंस, हाउ कैन यू डू द ट्रांजिशन टू अ फाइनेंस रोल? आंसर इसका भी यही है। माई बैकग्राउंड इज इन साइंस हैज ऑन माई एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स which I believe are transferable to the finance sector also. Through my training, which I have done in the last 4.5 months with an institute in Delhi, I have gained a solid understanding of financial concepts and developed my technical and practical skills necessary for this role. Sir, you require someone who can do the valuation of companies. And in the last around 4.5 months, I was doing rigorous study only on these financial modeling and valuations. I have prepared many financial models like this, and this. I also did the valuation of companies using DCF, trading comps, and transaction comps. I also did merger and acquisition analysis. I also prepared company profile and a pitch book. Right? I also did LBO analysis, and I believe that I can do much better because, sir, in my batch where I was studying, there were MBA students, there were commerce students, and as per the feedback of my trainer, I was doing better than those other candidates because I was fully focused for the last 4.5 months only on financial modeling and valuations. So I am of the opinion you need someone who can work on financial models and valuations, and this is exactly what I know today, and I am very much confident about it. Something like this, इस तरीके से आप अपना आंसर एंड कर दो। You can test my knowledge on that. इस तरीके से आप अपना आंसर एंड करोगे। क्या समझे? सवाल कोई भी है, आंसर लगभग वही है। समझ में आ रही है बात? अगर उसने ये सवाल किया, आपने ये वाला जवाब दिया, तो
तो इसके आगे प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे फाइनेंस के क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। लेकिन अब आपकी तैयारी भी उतनी होनी चाहिए कि आपने फाइनेंशियल मॉडल बनाए हैं, फाइनेंशियल मॉडल कैसे एक्सप्लेन करोगे, वैल्यूएशन करी है तो उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे। वैल्यूएशन के हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ और उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे चुका हूँ। उनको आप प्रैक्टिस करिए, अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठिए, उसको बोलो कि क्वेश्चन पूछ, आप उसको उसका आंसर दीजिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे देखते हैं। You have a gap of 2 years. Can you explain the reason? Why is this gap for? Yes, sir. Actually, sir, in this last 3.5 years around, I was preparing for UPSC exams. I used to study around 15 and 16 hours a day because I was fully focused for UPSC only. But I could not make it to finals, and now is the time to end that journey and bring the career on track and start my journey in this investment banking role. Sir, that 3 years and 3.5 years of time which I have spent, it was really not a wastage of time, because that has made me laborious. It has given me a skill which helps me to learn things very fast. And just in 3 months of time, where I was involved in a practical training program on financial modeling and valuation, I have learned so many things related to finance, and I could prepare 6 financial models of different companies. I could learn the valuations. I have done merger acquisition. I have done company profile and pitch book projects, LBO, and project financing. All of these things I have done in just 3 months of time frame. इस वीडियो में फिर इसके आंसर में मैंने फिर से क्या किया, मैंने बता दिया कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं कर रहा था 3.5 साल, उससे मैं बहुत लेबोरियस हो गया, बहुत फोकस्ड भी हो गया, ठीक है। उसी की वजह से मैंने ये जो कोर्स है सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट किया और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। एंड यू शुड नाउ फोकस ऑन दीज स्किल्स विच आई हैव इनकलकेटेड प्रैक्टिकली ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। अब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रिक्रूटर अब आपसे इन्हीं के ऊपर सवाल पूछेगा। सो now you should be ready for the questions on financial modeling and valuation, because the next question would be definitely from any of these projects which you have done, right? He will ask you to elaborate any of the project in detail, step by step. So that is the preparation you should focus on. Clear? Let's proceed for the next question. And this is related to irrelevant experience. The recruiter can ask you that you have an experience which does not match with the profile we are offering you. How do you justify that? Why should we hire you? Something like this. Now, what should be the answer for this question? That will depend on the type of profile you are working on. For example, if you are working on the marketing profile, you need to find something which is very relevant. You need to find a particular skill which is very relevant and that you can connect with the investment banking profile. Okay, for example, you could say, keep a smile on the face and say something like this: sir, when I was doing my MBA finance, from the campus placement itself I got placed in this company, and my job was to develop business for my company and do the client acquisition. I really enjoyed that profile also, and because I was able to communicate with the clients, I developed a lot of confidence while talking with the clients, and I developed convincing skills. I developed a lot of professionalism in me. So this experience definitely does not match with the profile you are offering me, but the skills that I have developed in that profile will also help me in the investment banking domain, because that communication skills, the presentation skills which I have developed in this experience will also help me. And sir, I also have developed the practical knowledge of preparing the financial modeling and valuation, because I did a 3 months of training program very recently. In that course also I developed technical skills of financial modeling and valuation and financial analysis, because I prepared so many financial models and I did the valuation of companies. I did merger acquisition. Like sir, I prepared the financial models of Netflix, Kellogg's, Tata Motors, Apple, McDonald, APA Corporation. And I did the valuation also of these companies using DCF valuation, company comparable analysis, company transaction analysis. Actually, sir, the soft skills which I have developed in my previous experience will help me
in this particular profile, and the technical skills of financial analysis are also required for this profile, because I have seen the job description which you have shared with me, and with that I can say that I am matching with the profile. My skills are actually matching with the profile you are offering. So I think sir you should test me on those skills instead. यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन, अपना आंसर एंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल मार्केटिंग की है। अब आ जाओ डीलर प्रोफाइल पे। डीलर कौन होता है? जो ब्रोकरेज फर्म होती है, उसमें जो डीलर प्रोफाइल में बैठता है, जो अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर्स बाय और सेल करता है, वो डीलर होता है। तो ट्रेडिंग डेस्क पे जो डीलर प्रोफाइल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उस प्रोफाइल पे काम कर रहे थे तो उसमें तो बहुत सारा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। आप क्या कह सकते हो? सर, आई अंडरस्टैंड दैट डीलर प्रोफाइल may not have exactly the same skills which you require for this profile, but there are certain things which I have developed even at the dealer profile. For example, sir, I used to do the trading on behalf of my clients in the stock market. So I used to track so many companies from different sectors. So there also I have developed a lot of knowledge regarding different sectors, how they are performing. I used to track the news related to those sectors. So this knowledge will also help me in financial analysis when I will be working in this profile. And also sir, I used to read the research reports which were prepared by the equity research analyst working in my company. So I used to study them every day, and I used to track different industries. So that particular skill set is definitely going to help me. And not just that sir, I also did a course on financial modeling and valuation very recently. In this course I have done so many things like this and this. Again आंसर वही है। अब मान लीजिए MIS रिपोर्टिंग प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो MIS रिपोर्टिंग प्रोफाइल, so yes sir, I was working in the MIS reporting profile. My job was to collect lot of data from different branches for different products. So much of data used to come to me, and I used to compile the data and used to prepare the dashboards, different types of charts, different type of data I used to collect and used to report to my management. So this also has given me lot of knowledge regarding how do we use Excel functions, how do we use Excel shortcuts. So not just that sir, I also did a course on financial modeling and valuation, which is very much required for this particular profile which you are offering me, because in that course I have learned this and this. क्या आप मेरी बात समझ पाए हो? फिर वही बात कहता हूं मैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कहा, कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो पहले इंटरव्यू को प्लान करके जाओ कि इंटरव्यू में आप क्या है जो डिस्कस करना चाहोगे, जिसके बेस पर सिलेक्शन होगा। और ऐसा कोई वीक पॉइंट है आपका, तो उसके आंसर को भी आप प्रिपेयर करके जाओ, और प्रिपेयर ऐसे करो कि सारा डिस्कशन वापस आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के प्रोजेक्ट्स पर आ जाए। रिक्रूटर आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहता, वो आपको हायर ही करना चाहता है। तो वो हायर क्यों करे, उसके लिए एक सॉलिड रीजन उसको आपको देना पड़ेगा। वो क्या है? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी नॉलेज फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के ऊपर। इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है, आप बीकॉम हो, इन सबसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज उस टॉपिक की जो रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है। समझ गए मेरी बात? अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, जो वैल्यूएशंस हैं, उन पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनको आंसर कैसे करना है। मेन पॉइंट मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी इस वीडियो के थ्रू, कि आपका फोकस इंटरव्यू में ये रहना चाहिए कि डिस्कशन को कैसे भी करके अपने प्रोजेक्ट्स पे लेके आना है। अगर रिक्रूटर एक बार उन प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस करना शुरू कर दे, तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं इंटरव्यू के अंदर, कि आपने डीसीएफ किया तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकाली, फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे निकाला, ठीक है, वैक कैसे निकाला, फिर एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकाली, फिर प्रैक्टिकल टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। उन पे भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर उसका डिस्कशन आ जाए कि नेटफ्लिक्स का मॉडल कैसे बनाया है, तो नेटफ्लिक्स का मॉडल या एप्पल का मॉडल या टाटा मोटर्स का मॉडल स्टेप बाय स्टेप अपने कैसे बनाया है,
वो आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर लेना। ठीक है, मैं किसी वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको मॉडल्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। I'll see you in the next video, and in the next video we will understand how do you explain, how you should explain the financial model. I'll take one example of Netflix or Tata Motors or Kellogg's or Apple or McDonald or something else. एक मॉडल लेंगे और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।